At the moment, we have more than 74 million patients who are diabetic. And as per report, by 2025, the number of diabetes in India will increase to 134 millions. So one really has to take care of your diet plans. And diet plans should be balanced diet. नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और हेलो डॉक्टर में जैसा कि आप जानते हैं कि अलग अलग स्पेशलिस्ट से हम अलग अलग बीमारियों पर बातचीत करते हैं, आपको रूबरू कराते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि आप तक जागरूकता पहुंचे। और आज हम पहुंचे हैं पालम में स्थित दिव्यप्रस हॉस्पिटल में और मेरे साथ हॉस्पिटल के एमडी और जनरल फिजिशियन डॉक्टर ज्ञान वत्स हैं। सर से हम बात करें कि जिस तरह से ओबेसिटी की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, मोटापे से लोग बड़े परेशान हैं, क्या कुछ बीमारियां मोटापे की वजह से हो सकती हैं और कैसे इसे कंट्रोल में कर सकते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। मोटापे से आजकल लोग बहुत परेशान हैं, मोस्टली महिलाएं। तो सर मोटापे से क्या कुछ बीमारियां और हो सकती हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है? देखो, बेसिकली दो इंडिया इज़ ए पुअर कंट्री, बट पैराडॉक्सिकली obesity has become a big menace and problem for Indian population, especially we Indians. And obesity के कारण जो main problem है, India has become a biggest burden of diabetes. At the moment, we have more than 74 million patients who are diabetic. And as per report, by 2025, the number of diabetes in India will increase to 134 millions. So you can see what we are heading for. And more or less, obesity in India is because of lifestyle problem, of environmental problem. It's less of because of genetics. So biggest problem with us is our lifestyle and environmental factor, which has contributed immensely to diabetes and obesity. Prevention of obesity is very, very essential because directly it leads to reduction of your cardiovascular problems as well as mortality. So, in fact, if you can take care of obesity, we can delay and prevent diabetes as well. And if you can delay your diabetes, so you can say you can delay major complication, that is cardiovascular problems. क्या कुछ खान पान से, क्या कुछ उनकी डाइट होनी चाहिए, क्या कुछ दिनचर्या और क्या कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए? क्योंकि बहुत सारे लोग खान पान का तो ध्यान रखते हैं लेकिन बैठे रहते हैं, बैठकर काम करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते। देखो, डेफिनेटली आई स्ट्रेस द फैक्ट दैट एनवायरमेंटल एंड लाइफस्टाइल हैज़ बिकम द बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया आवर डाइट इज़ वेरी रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एज वेल एज फैट, which is basically, you can say, we are consuming a very deadly diet. So if our friend tell us we change or modify our diets, so this we're going to head for a big problem. ये तो हमने शरीर के मोटापे की बात करी है। फैटी लीवर की अगर बात करें तो फैटी लीवर की समस्या भी लगातार बढ़ रही है। ये क्यों होता है और इसका क्या कुछ ट्रीटमेंट है? देखो, as per reports, if you see more than your subcutaneous fat, it is the visceral fat which is dangerous. And the fatty liver or visceral fat, most important again the cause is your diet and your lack of physical activities. So if you really have to take care of your fatty livers, you have to really change the diet plans. You really have to modify your physical activities. As per WHO guidelines, every person who is a moderate or sedentary lifestyle have 150 minutes per week of physical activities of moderate intensity one should be doing. लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स, सोने की सुंदरता और चांदी की चमक के साथ प्योरिटी का पूरा भरोसा। सूट साड़ी, लहंगा गाउन्स व हैंडमेड कॉस्ट्यूम्स का भव्य शोरूम। तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के पास एक छत के नीचे कॉस्ट्यूम्स एंड ज्वेलरी का शानदार कलेक्शन। फुल कलेक्शन ऑफ हॉलमार्क गोल्ड, डायमंड, सिल्वर ज्वेलरी, वेडिंग साड़ी एंड लहंगा चोली। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स 9810001437, शॉप नंबर 2, न्यू मार्केट, अपोजिट तिलक नगर मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली 10018।
पीपल आर सफरिंग फ्रॉम फैटी लीवर बट दे डोंट केयर अबाउट दैट बिकॉज वो टेस्ट के बाद ही पता चलता है. बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता है कि फैटी लीवर है. इसके नेक्स्ट स्टेप कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं अगर वो ध्यान ना दे उस तरफ, तो आगे कितना ज़्यादा ये खतरनाक हो सकता है फैटी लीवर? No, if you specifically ask about fatty livers, so though at the initial stage it is asymptomatic, but now we are heading for NASH, non-alcoholic cirrhosis. So this is all steroid hepatitis and alcohol is more dangerous than alcoholic, or sorry, I would say equal as dangerous as alcoholic cirrhosis. So one really has to take care of your diet plans, and diet plans should be balanced diet. Our carbohydrates and our fat, they have to be restricted, and you should be having some calorie deficient diet. 500 kilocalories per day of reduction should be done if you will come in the category of obese. Okay, Dr. Gyan, what are the symptoms of fatty livers? How the patient will know that he has fatty liver and he is supposed to go to doctor? Those is no specific symptoms of fatty liver. Definitely, person who is obese are more prone to have fatty liver. Person who is suffering from diabetes or are pre-diabetic are prone for fatty livers. Those having a very diet rich in carbohydrates or fats or maybe consuming a lot of alcohols are prone for are prone for fatty livers. Do we have multiple grades? Grade 1, grade 2, grade 3, and those specifically you can diagnose only on ultrasounds. If somebody wants to meet you, तो आपका ओपीडी टाइमिंग क्या है सर? कोई अगर आपको देख रहे हैं, हमारे जो दर्शक हैं, आपसे मिलना चाहें तो क्या कुछ ओपीडी टाइम है आपसे मिलने? Available every day from Monday till Saturday between 12 and 3 p.m. अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था. लास्ट टाइम जो हमने कवरेज की थी तो आपने CGHS कार्ड्स अपने एम्प्लॉयज़ को दिए थे. अब क्या कुछ नया है? सुनने में आ रहा है कि जो है महिलाओं के लिए भी कुछ स्पेशल दिव्य प्रेस हॉस्पिटल दे रहा है. Thanks to our CEO, Mr. Vivek, so we are coming with some new and wonderful innovative ideas. So now we are focusing on mother and child healthcare. So we are promoting this field. So persons or families who want to visit us for the medical care. So for every child who comes for our OPD opinions as well as investigations, certain amount of discounts will be provided. And same will be offered for our antenatal care as well as if the family wants to undergo deliveries in our centers, we'll give them handsome discounts. Rest will be discussed by our team. डिलीवरी के मामले में सक्सेस रेट क्या है सर हॉस्पिटल? I think touch wood, we are so far very though it's a very not an easy, has a lot of complications associated, but Divyapas Hospital is lucky that so far every delivery that we have conducted, our results has been 100%. अच्छा सर, एक और सवाल. कैंप्स लगातार हम लोग देखते हैं दिल्ली के विभिन्न इलाकों में, और ऐसे इलाकों में जहां पिछड़ा वर्ग रहता है, गरीब लोग रहते हैं, वहां हॉस्पिटल लगातार कैंप लगा रहा है, कई वर्षों से लगा रहा है. तो इसके पीछे क्या मकसद लेकर आप लोग चल रहे हैं? क्योंकि हॉस्पिटल में तो हेल्थ सर्विस दे ही रहे हैं, साथ में सोशल वर्क में भी लगातार ध्यान दिया जा रहा है. See, actually, the message that we need to convey that Divyapas is not only for person who can afford us, it's also for person who cannot afford us. So those person who think that they find it very difficult to come to us because of some money issues, we approach them directly to their respective areas, and we provide them with education tips as well as some screening process, so at least some health benefits they can take. थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम. Welcome. तो ये थे डॉक्टर ज्ञान वत्स मेरे साथ, जिन्होंने हेल्थ से जुड़े तमाम विषयों पर मुझसे बातचीत की. कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़. खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन.